Speakers are requested to keep their microphones off when they are not speaking to ensure good audio quality for everyone. You're also encouraged to switch on your cameras, especially when you're speaking, if your network allows to do that without any disruptions. We also invite questions from our audience and colleagues at the end or as the session goes. Please feel free to write them in the Q&A box on the right side. Speakers are requested to keep the chat box open in the window. You can also indicate that you want to speak by clicking the raise hand tab on the right side of the chat window. The session will also be telecasted live on SDPI's Facebook page. For those watching us on Facebook Live, please write your questions in the chat there. They will be conveyed to the speakers through our team. The seminar will be recorded and the video will be posted online. You are welcome to revisit the discussion later and feel free to share it with your network. Views expressed during all webinars are the views of the respected speakers and do not represent the policy of the organization. Today's session will be moderated by Mr. Shahid Minhas, Head Center for Learning and Development, SDPI. And now I hand over the session to him so we may begin the proceedings. Thank you. Thank you so much, Ms. Aisha, for this very brief introduction and the proceeding. So, ladies and gentlemen, my name is Shahid Minhas and I'm working with Center for Learning and Development at SDPI. We are really honored that today we have distinguished panelists who will be sharing the sustainable development beyond pandemic and beyond COVID-19. What are the way forward for Pakistan? What are the real challenges to a country which is a developing country, and what sort of challenges that we are facing for the last so many years, particularly during this pandemic, COVID-19. And now I think this is the opportunity that we should engage the policymakers, the analysts, the academician, the technical and agriculture experts, and the health professionals, so that a common Pakistani should have an idea that what or he or she may do, and what sort of things he or she should have in mind while he or she is moving beyond the COVID-19 or the pandemic. For today's session, we have our distinguished panelists. Very briefly, let me say that we have Dr. Samina Taslim Zehra. She is National Program Manager, Reform and Innovation in the government for high performance, working with UNDP. She is a CSP officer. Madam, thank you so much for your time. We welcome to this very important webinar to share your thoughts in your personal capacity as a leader to guide to the people of Pakistan. We have second panelist with us, Professor Dr. Shahzad Ali Khan. He is the Vice Chancellor of the Health Services Academy and is a key figure in the NCOC and the decision-making body for the health development and health development plans. So thank you so much for joining us, and we'll be listening to you. We have our distinguished panelist, Professor Dr. Iqrar Ali Khan. Dr. Iqrar Ali Khan is a Vice Chancellor, Agriculture University, Faisalabad. He is a renowned agriculturist and has in-depth knowledge and experience of agriculture economy. Being a agriculture country, that we really need to know what we should do after this pandemic. So thank you so much for joining us. Ladies and gentlemen, we have Professor Dr. Habib Bokhari. He is the Vice Chancellor of the University of Kohsar. He is a biological sciences expert, and he is really having an in-depth insight of the pandemic and what should we do beyond this pandemic. So thank you so much for your precious time. We know that you are having another meeting after some time, but thank you so much for joining us. Ladies and gentlemen, let me welcome Professor Dr. Sajida Noureen. She is the Vice Chancellor of Sardar Bahadur Khan Women University, Quetta. She is not only an academician, a leader, but also she is a genuine leader, grooming the female and young girls of Pakistan who are equally contributing in the
national development and the national economy. Madam, thank you so much for your time, for joining us. Last but not the least, let me invite Dr. Fatima Rehan Dar. She is an academician. She has a vast experience in policy planning for education. Currently, she is the CEO of Consulting, which is basically focusing on the policy reforms in education. And thank you so much, Dr. Fatma, for joining us. So, ladies and gentlemen, so these are our panelists, and let me very briefly say that let's start with Dr. Shahzad Ali Khan. He is the Vice Chancellor, Health Services Academy. So, before I invite Dr. Shahzad Ali Khan to speak, Assalamu alaikum, Dr. Iqrar Sahab. Sir, thank you so much. I'm sorry I was a bit late. No, it's okay, sir. We are just in the beginning process. And let me. Assalamu alaikum, Shahid. Walaikum salam, sir. Thank you so much. Dr. Sir, thank you so much. So I'm just introducing you, Dr. Shahzad, sir, for your. Let me introduce Dr. Shahzad Ali Khan. He has a rare combination of MBBS from King Edward Medical College, then MBA Finance, and then Master of Science in Public Health, then PhD in Management Sciences. I think this is a rare combination in a society like Pakistan. So he has over 30 years of experience in public health, tertiary healthcare, administration and management of healthcare. He has number of fellowship of Royal College of Physicians, London Fellowship of Royal Society of Public Health, UK, member of many universities, academic council, member of adjacent faculty of PhD examination, more than 184 research paper and publication. Sir, with this immense knowledge and expertise of having biological and medical sciences, also with the management sciences, sir, we would like to start with you as we have mentioned that we are now focusing the first 5 goals of sustainable development, SDGs, first 5 goals. And so we are just talking about that. Being an academician, being a medical professional, being a health professional, we would like to know that, it is said that now the pandemic is over. We have suffered a lot. Alhamdulillah, there was no much more casualties in Pakistani society. But economically, financially, medical point of view, so we have suffered a lot. So, sir, हमें थोड़ा सा बताइए कि what is the way forward? What should now we do as a society? So, over to Dr. Shahzad Ali Khan. डॉक्टर शहजाद, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, अब आवाज आ रही है आपको, शाहिद? नहीं, जी अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत आपने तफसीली तारुफ करा दिया। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करूंगा। कैन वी बी बायलिंगुअल? दोनों यूज कर सकते हैं, उर्दू इंग्लिश, या सिर्फ इंग्लिश में? No, of course, bilingual would be perfect. Okay, so this COVID pandemic has affected more into systems which were supposed to be more sustainable and advanced. तो वो जो एक हमारे जहन में sustainable pillars थे ना, जिसमें बहुत हम अच्छी वो बातें करते थे कि गवर्नमेंट बाय इन हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो, और प्रोग्रेस की तरफ जाएं, और मतलब सिस्टम डेवलपमेंट हो। कोविड ने कुछ ऐसा किया कि जिसमें बड़े बड़े जो कहते हैं ना बुर्ज गिर गए, और दुनिया के ऐसे ऐसे कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम, में सिर्फ हेल्थ से बात करूंगा, हेल्थ के सिस्टम दुनिया के सारे तकरीबन डिमोलिश हो गए। और उसकी वजह जाहिर है पेंडेमिक था, और फिर ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल नहीं था इसका, तो बहुत सारे रीजन थे। मैं बीइंग एन एकेडमिशियन और बीइंग इवैल्यूएटर ऑफ सो मेनी प्रोजेक्ट्स, कुछ चीजें हमें कर लेनी चाहिए, अब सिस्टम्स डेवलप कर लेने चाहिए फॉर द टॉपिक जो आज आपने लिखा सस्टेनेबिलिटी का। देखिए, द सस्टेनेबिलिटी थिंग इट कम्स when you let go of this project approach. Whenever you have a project based approach, whether it's in gender, whether it's in any education institute, or in health,
the projects come and they go, and the things go back to the ground zero. So I'll take an example of some of the districts where we did a lot of interventions, and things went very nice and up, and indicators improved. The moment the donor went out or the implementer went out, the things over there are now again where we started. So when you talk about sustainable development or sustainability in development, I think it needs more sort of a programmatic approach rather than a project approach. So हमारे अपने system को सबसे important है district health system. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो कोरोना ने हमें सिखाया है ना, हमने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ काम किया है। देखें, पाकिस्तान के पूरे बेसिक हेल्थ यूनिट्स फैसिलिटीज सारी की सारी कनेक्टेड थी डीएचआईएस के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ ऑफिसर के साथ, डीएचआईएस कोऑर्डिनेटर के साथ। वहां से डाटा आता था, सारे का सारा प्रोविंशियल ऑफिस में, प्रोविंशियल ऑफिस भेजते थे हमारे पास एनसीओसी में। सो अगर हम एक कोविड के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम एजुकेशन के लिए, हेल्थ के बाकी प्रॉब्लम्स के लिए, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड तो बना हुआ है। सो अगर आपने सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, इफ यू वांट टू सस्टेन the initial effort or the impact of all the efforts which are being done, you have to let go of this project approach. Number 2 is fragmentation. Everybody is doing which everybody else is doing as well. So some things no one is doing and many things everybody is doing. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपका एमएनसीएच के नाम पे पाकिस्तान में तकरीबन हर डोनर एजेंसी का प्रोजेक्ट है। डब्ल्यूएचओ का भी है, यूनिसेफ का भी है, यूएनएफपीए का भी है, जेंडर वालों का भी है, मतलब यू जस्ट नेम, यूएनडीपी का भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये डुप्लीकेशन हो रही होगी एफर्ट्स की, और अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तो इसमें कहाँ से एफिशिएंसी आती है? तो फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम्स की भी है। एक आपका लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है, एक आपका एमएनसीएच प्रोग्राम है, एक आपका ईपीआई का है, फिर न्यूट्रिशन का है। सो देयर आर सो मेनी वर्टिकलाइजेशन बने हुए हैं। वर्टिकलाइजेशन हुई हुई है, ये रिसोर्सेज की बिल्कुल वेस्टेज है। यू शुड नॉट बी वेस्टिंग रिसोर्सेज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। देखें, आपकी एलएसडब्ल्यू है ना, तो उसी को टारगेट करना है। एमएनसीएच वाले ने भी, उसी को टीबी वाले ने भी, उसी को हेपेटाइटिस वाले ने। वो एक एलएसडब्ल्यू है, लेकिन हर प्रोग्राम उसको फोकस है। हाउ कैन वी डेवलप अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम जिसके अंदर ये ड्यूटी उसके साथ बिल्ट इन हो? व्हाई डू यू नीड अ फुल फ्लैज वर्टिकल ऑफिस? सो कोविड ने जब हमें ये बताया कि कोविड के लिए सिस्टम डिस्ट्रिक्ट का यूज हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। हमारे पास रियल टाइम एनसीओसी में सुबह के 10 बजे मीटिंग शुरू होती थी। पूरे पाकिस्तान का एक एक एडमिटेड केस, एक एक कॉम्प्लिकेटेड, ऑक्सीजन पे कितने हैं और कितने जो हैं वो टेस्टों में पॉजिटिव हुए हैं। हमें ये पता था कि टेस्ट में इतने पॉजिटिव हुए हैं, अस्पतालों में इतने गए हैं। सो हमें इस किस्म की एक रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी जिसमें हमें इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सो आई स्टॉप हियर बिकॉज अभी बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट ने बोलना है। मेरा जो मैसेज है वो ये है कि वर्टिकलाइजेशन को खत्म करें। जो लूप वेस्टेजेस हैं, खामखा की पिलफरेज है, एचआर को खपाने के लिए, सिर्फ नौकरियां देने के लिए हम इतने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो जाया करते हैं, और फिर उसके बाद डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है। इंटीग्रेट करें। अब पॉपुलेशन को अगर आप देखें ना, गोल्स पॉपुलेशन के और हेल्थ के सेम है। हमारा पॉपुलेशन का प्रोग्राम अलग है, हेल्थ का प्रोग्राम अलग है। कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेट हो ना। हेल्थ ठीक होती है, पॉपुलेशन सही ना हो, तो पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ वाले सपोर्ट ना करें तो पॉपुलेशन सर्विसेज भी नहीं दे सकते। सो इंटीग्रेट करें और इसको एफिशिएंट बनाएं। आई थिंक द डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी विल ऑटोमेटिकली कम। ओवर टू यू शाहिद। Sir, thank you very much for highlighting the key challenges that we need to integrate reforms or vertical जो ग्रोथ है उसको हमें रोकना है। यकीनन आपकी तरफ अभी हम दोबारा आएंगे सर। चूँकि बात हेल्थ की हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीब बुखारी साहब, जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोसार के। He has done his master's in biochemistry from Qaiyum University, then MPhil in biochemistry, PhD from University of Glasgow in microbiology and immunology, and then George Mason University से उन्होंने पोस्ट डॉक की है in 2005-2006. Dr. Sab is the postdoc Commonwealth Fellow of London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. He has also postdoc as Fulbright Fellow, Department of Microbiology from
UPENN, School of Medicine, UPENN. Sir, with this very brief introduction, as we are talking about the health perspective, as Dr. Shahzad has highlighted the key challenges where we need to integrate and what we should not do. सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भी एकेडमिशियन भी हैं और हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं, सो इस पैंडेमिक के बाद कैसे देखते हैं कि हमें जो कुछ चीज़ें तो डॉक्टर शहजाद साहब ने हाईलाइट की, सो कैसे देखते हैं कि हमें एकेडमिया के अंदर क्या करना है, हमें ओवरऑल सोसाइटी में क्या करना है और हमारे पॉलिसी मेकर्स को किस डायमेंशन में जाना चाहिए? ओवर टू डॉक्टर हबीब बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड शाहिद साहब has made it very easy for us, बहुत ही सिंपल उन्होंने करवाया, तो विल स्टिक टू दैट मॉडल, ज़्यादा उस पर एक्सटेंसिव नहीं करेंगे बात। आई बीन वर्किंग ऑन माल न्यूट्रिशन के ऊपर, डायरियल डिजीज के ऊपर, इवन प्री टर्म डिलीवरीज के ऊपर, ये मेरा पिछले कोई 10-15 साल से ये जो काम था। तो आई try to link all those things in a scenario के post COVID scenario और currently जो इस वक्त situation चल रही है, so what will be the impact? As you know that these SDGs are very complex issues हैं, और इसके अंदर there are a lot of stakeholders involved and very limited data or literature is out there, especially the 5 SDGs you have picked for this session. उसमें अगर we start from a poverty, hunger, health से लेके education and then finally gender, I'll try to make a link and relevance between all of them, keeping in view what are the challenges we are facing in Pakistan and how we can basically work on those challenges, that a few solutions और थोड़े से उसके ऊपर statistics and figures के ऊपर बात कर लें। तो we've also seen the post COVID और जो COVID की scenario चल रही है, we have all the data available with reference to the COVID and its impact are yet to see in countries such as low income country or middle income countries. इसके ऊपर इसका भी impact हमें देखना बाकी है। We have not absolutely sure what sort of impact will be down the road, तो 3 साल 4 साल बाद जो नजर आएगा, क्योंकि it's a very complex conundrum. Now since we have a data from a SARS, जो पहला event हुआ था 2003-4 में, उसके अंदर हमें देखा कि इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मुतासिर किया और तकरीबन $20 billion का लॉस हुआ, and it even spread out into very few number of countries. और अगर उसका कॉस्ट देखा जाए तो $2 million per person वो केस जो है वो कॉस्ट turns out to be the scenario, but we have yet to see, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे आया, ये हमारा दूसरा एपिसोड है, तो इससे जो मुतासरा ममालिक हैं उसके ऊपर रात इसके अभी हमने देखने हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पाकिस्तानी सिनेरियो और चैलेंज, अगर आप पाकिस्तान के सिनेरियो को देखें तो इस वक्त हमें मालूम है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त आपको पता है कि 220 मिलियन से ऊपर है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नाइजीरिया के बाद नंबर 2 पे है। अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स मैक्सिमम हैं। सैनिटेशन हाइजीन का कंडीशन डॉक्टर शहजाद साहब ने जिस तरह फरमाया, पाकिस्तान नंबर हाईली रैंक्ड इन दैट एज वेल, हाईली रैंक्ड इन पॉवर्टी। जिस तरह मैंने कहा 40% के करीब लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। इसी तरह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की देख लें, अगर मैं ये 500 को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरा केस बिल्ड कर लूँ, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि तकरीबन 22 मिलियन के करीब बच्चा आउट ऑफ स्कूल है इस वक्त, और इसी तरह 37% पॉपुलेशन जो है वो स्टंटेड ग्रोथ के साथ है। ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर इज विद द माल न्यूट्रिशन और अनवेट के साथ रह रही है। तो ये और इसी तरह 53,000 बच्चे हर साल नीडलेसली डाई बिकॉज ऑफ ए डायरियल डिजीज की वजह से। इतना सा बर्डन है, देयर आर सो मेनी इम्यूनाइजेशन इश्यू, और ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ वी आर फेसिंग अ कोविड, और पोलियो का इश्यू हमारे पास ऑलरेडी देखे वो कर रहा था। तो ये बीमारियों के हवाले से, सैनिटेशन और हाइजीन के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़ा कंसर्न, क्योंकि पॉवर्टी और हंगर का ताल्लुक इकरार साहब उसके ऊपर बेहतर रोशनी डालेंगे। We know that about 2 billion more people will be added to this planet in next 20 years. And what sort of plans we are now having in future Pakistan के हवाले से way forward? तो ये पाकिस्तान की population size, food की needs और security की needs, so these are all basically, and they all will basically cannot be achieved by overwhelming the environment, climate, क्योंकि इसका सारा impact जो है extensive, जब हम कह रहे हैं intensification of farming हो जाए, इंटेंसिफिकेशन लाइव स्टॉक के अंदर हम बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान टॉप 20 उसमें है और इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट हैविंग सेड दैट, अब इसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन कमिंग बैक टू द एक्चुअल प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने पिछले 10-15 सालों में देखा कि जो हमारी यूथ है जिसके ऊपर वी रिलाई अ लॉट,
क्योंकि ये वो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, अगर ये यूथ वायबल है, इंटेलेक्चुअली वायबल है, तो there can be a lot of things can be done, and this nations have already shown that कि आप इसकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसी यूथ के ऊपर और वायबल यूथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब मैंने 37% स्टैंडर्ड ग्रोथ का बच्चों का कहा, एक अच्छा खासा नंबर, तकरीबन इट टर्न्स आउट टू बी 10 से 15 मिलियन बच्चे कम से कम इसके साथ रह रहे हैं। इट्स नॉट ओनली बच्चा लोग, बट इट्स ऑल्सो एडल्ट्स के अंदर भी इसके जो असरात हैं, और इसका आखिर में एफिशिएंसी और वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर होता है। यू लूज नंबर ऑफ ईयर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, और इसके साथ फिजिकली जब बच्चे और मेंटली ग्रो नहीं कर पाते तो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद चैलेंजेस। और ये ड्रॉप आउट का मैंने जिक्र किया, वन ऑफ द रीजन व्हिच वी हैव नॉट बीन एबल टू लुक इनटू कैन बी दिस वन, जो आपकी जो स्टंटिंग ग्रोथ के साथ बच्चे आ रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स नहीं होता और उसके बाद ये बच्चे बाहर ड्रॉप आउट होते हैं। तो इसका ताल्लुक माल न्यूट्रिशन के साथ भी नॉर्मली दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो है ही हैं, बट देयर आर अदर, क्योंकि ये हमने करके देख लिया पाकिस्तान में, इट हैज नॉट सॉल्व दिस, so there are other complex issues which are available in our environment, which are stress factor, उसमें सारे फहरिस्त sanitation और hygiene, occupational hazards है, maternal health है, जहाँ पे gender की बात आ रही है, क्योंकि अब मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ, we are touching that how we can basically empower our women actually to take care of their environment, to take care of their sanitation, and in order to improve that, little educational awareness how that environment plays a role in the upbringing of a child in very early childhood, 3-4 साल जो पहले के हैं वो बहुत जरूरी और क्रिटिकल है। इसकी बेसिस के ऊपर पिछला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। इंडिया के दो हमारे जो हस्बैंड वाइफ थे, तो उनको बेसिकली उन्होंने यही कहा कि आप इफ यू इन्वेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड ऑन हेल्थ के ऊपर, तो यू सेव अ लॉट ऑफ अपना जो मनी है, यू सेव, आप अपनी उसकी हेल्थ के मैटर्स हैं, एजुकेशन के मैटर्स हैं, उसको आप बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं अगर पहले 3-4 साल उनकी ऊपर इन्वेस्टमेंट उनकी हेल्थ के ऊपर कर दी जाए। क्योंकि ये जो अब मैं स्टंटिंग का जिक्र कर रहा हूँ, इसके हवाले से ये माल नरिश्ड बच्चों का या अंडरवेट बच्चों का जिक्र कर रहा हूँ, इनकी जो गट की हालत होती है बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन इन गट एंड ऑल्सो इन ए ब्रेन दैट लीड्स टू अ फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और इनकी लर्निंग आउटकम जो है उस वक्त जब मुतासिर होती है, और दीज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंजन हैं। तो इसके अंदर पॉवर्टी का हमने जिक्र किया, इसमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से कहा, फूड सिक्योरिटी का ताल्लुक हमारे क्लाइमेट के साथ भी हमने उसको जोड़ा, और उसके बाद हमने आपने एजुकेशन और वेलबींग का ताल्लुक जोड़ा। तो अब ये वायबल करना, हेल्थ के साथ लिंक करना एजुकेशन को, दीज शुड बी द प्रायोरिटीज एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डन ऑन दैट। और शहजाद साहब ने कहा बहुत सारे लोग, बहुत सारे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड प्रायोरिटाइज आर अपनी जो अपनी प्रायोरिटीज को जरा अलाइन करना होगा, कीपिंग इन व्यू दैट पैंडेमिक के जो मैंने असर कहा, वी हैव येट टू सी दैट, क्योंकि ये वो तबका था जो हमारे यहाँ मुतासिर सबसे ज्यादा हुआ, लेबर, लो इनकम ग्रुप, बट समहाउ फॉर्चुनेटली लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, एनसीओसी हैव डन अ वंडरफुल जॉब, हैज एक्चुअली मैटर ऑफ फैक्ट इमीडिएटेड, और उसके अंदर कुछ बेहतरी रही। तो वो जो गरीब तबका था जो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस था, उसको काफी हद तक इससे सहारा मिला, बट वी हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट। फिर इसके हवाले से डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र आया, जेंडर्स के हवाले से, वी हैव ऑल सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, इन पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन प्रोसेस दिस इज आल्सो हैपन एंड देयर हैज। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ जिक्र करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल हो गए हैं, ये मैंने जितने भी जिक्र किए हैं, दीज आर ऑल बेसिकली अ फेडरल सब्जेक्ट,